It is a delight, as always, to be able to connect to all of you. As the whole nation and the whole world is celebrating this important occasion of the birth anniversary of Bharat Ratna Dr. B.R. Ambedkar, we thought that it is of great relevance, of utmost relevance, uh, to be able to visualize and then to in the context of 21st century higher education landscape to discuss the role of educational philosophy as propounded by Dr. B.R. Ambedkar. So when I say that the context is important, let me spell it out for you in the sense that when we are talking about new education policy, when we are talking about entrepreneurship, innovation, creativity, and the world looks at India in its capacity as the change maker. Uh, you see, if we read United Nations statements, we find that because of the demographic dividend, uh, they are saying that if Indian youth does not move forward, the world does not move forward. And by that sense, because our more than 65% of population is under 25, so the youth potential is important. So in that context, it is important that we look at the life, legacy, mission, and particularly the idea of education that Dr. Ambedkar provided. It is if I give you the if I may briefly extend the context also. People say that Dr. Ambedkar, Dr. B.R. Ambedkar is a man of many talents. He has, multifaceted contribution that he has made. So, people recognize him as a constitutionalist. People recognized him as a person who launched a crusade for women's emancipation, women's rights, as a man of economics, as a man who wanted to kind of break free from the shackles of religious ritualism. And then you have so many other roles, as a social reformer. And then, but I think the real essence of his life lies in the educational philosophy that he proposes. I think I'll take you through that. And some people say that he said so much about law, politics, justice, and the three words, liberty, equality, and fraternity. But I think that this word is crucial. Education. In the sense that if we say that education is something with which we can bring about a lasting change in our ecosystem, I think Ambedkar has lived that. We always talk about that philosophers come and theorize about the situation, about the larger human condition. But you'll find that there are not many people who talk about how this will change. And I think in this sense, Ambedkar comes and intervenes, and he suggests as a remedy also, a kind of recipe as to how we can bring about that thing. And that his prescription lies in qualitative education, real education, and through non-violent, peaceful, and lasting change that we can visualize in our lives. So yes, if we go to our it is important that we look at how Ambedkar propounded an idea. And if we in the sense that after his life, we find that he the core message lies in equality and social justice. And if I may read about the quote, education is which make men fearless. It teaches unity, it makes them understand their birthright, and teaches a man to struggle and fight for the freedom. So yes, this is important, that how education defines the core essence, core values of a human life. And ever since, he himself went through that process, and he acquired the most advanced standardized knowledge at that time through in India and through other overseas institutions
such as London School of Economics and Columbia Universities will take that into account. If you look at how his background is, as you know, that he was born in a situation where he faced troubles, and because the curse of untouchability was rampant, and we have seen, like, if you read through his works, he gives an active testimony of how he suffered, and then he went on to, like, acquire education. And if you read about it in Waiting for Visa, his autobiographical account, and then he acquires this. And if you look at his contribution to education, we find that because that he realizes that education is important, he initiates several important institutions. For example, like the first Bahishkrit Hitkarini Sabha. I think the essence was that all those people who have been marginalized, who have been deprived of education, this Sabha, Bahishkrit Hitkarini Sabha will do everything that it takes to ensure education for them. After that, we find that in 1940s, he comes up with this People's Education Society. You must have heard of two very important institutions. One is Siddhartha College and the other is Milind College. And you find that his contribution is important in the incipient years when it was being drafted in University of Mumbai. And then, if you look at how he derives, it is important to look at when we are talking about his educational philosophy, what gives him strength, what are his sources and resources as far as his inspiration is concerned. So he identifies with Buddha, he identifies with Jyotiba Phule, he identifies with Kabir. So in that sense, of course, there were many other figures, but he primarily identifies these three as his gurus. And I mean, in every aspect, you'll find that if you look at the idea of be thy own light, and like there's a non-ritualistic philosophy of Kabir, and Phule's thrust on education. I mean, and if you look at, like, let's kind of if we kind of run through what defines his education philosophy, cultivation of mind. Just like we are always concerned about our external sense of appearance, we are always worried how do we look. It is also important that we cultivate our mind. It is important. I mean, that's when education comes to our help. Again, I know everyone talks about cultivation of our physical self. So at all levels, be it physical, be it mental, and then psychological health also. And every he talks about it in a big way. So Ambedkar emphasizes that the education is of importance. And if we go through, like, the institutions, Siddharth College and Milind College, the kind of critical temper that he's trying, and he also established, if at this point of time, if I tell you, like, education in all its aspects, in all its kind of multiple roles. He also established an institution for the legislators and parliamentarians, if you look at it. So yes, I mean, as to how leadership can be inculcated, what has to be the role of legislators in a decision-making process. So I think, yes, if we like, why education, I mean, he is basically to kind of ensure the most qualitative absorptions of human values, which are equality and liberty, coupled with, like, also combined with a sense of fraternity. I mean, yes, so I think this is important, like, if we are tracing about how Ambedkar kind of launches himself. If I may talk about his sense of coming back from London School of Economics, and I think this is like when he says that it is about giving it back. You see, these days we find that education is sometimes a kind of instrument of self-enhancement, where we look at it as a medium where one can glorify one's own personal sense of life. But Ambedkar says that it is through education that one gets an opportunity to contribute to the process
of making of a better individual, a better society, a better nation, and a better world. So he comes back. He could always be there in a very comfortable situation overseas, and kind of be little instructive, and he could theorize from there, and he could write books. But he came back. He starts active public engagement. That is very important. So whatever education that we are taking is for the purpose of preparing ourselves, both external and internal, for the for our social contribution. So he comes back. He underscores his role in the society, and beginning of when I am talking about public engagement, the way he starts, 3 newspapers, beginning with Mook Nayak, Bahishkrit Bharat, and Janta, you find that he is trying to, and that too in Marathi. So you understand. So when we are saying that education is about learning and then kind of unlearning the same. So he is such a scholarly person, such a kind of intellectually stalwart he is, but he still tries to connect to the people. I think this the spirit of volunteership he's trying to communicate, how we can make our accomplishments available for the society at large is crucial. I think Ambedkar's life is, his educational philosophies, a core essence is, if we have cultivation of mind on one side, we also have how we make, how we translate all our intellectual, abilities for the purpose of enhancement of common man's interest. This is important. So yes, the way he talks about, I would like to briefly talk about like how he takes up issues, for example, like key ideas, universal access to education. You find that it's like it's not, it has to shed the elitist tag. Every person's engagement with education for personality development and character building is not that just for degree. Character is the real essence. Character is like the highest point. So if we are saying that the most universal values, the most important values has to kind of come in a person's life, be it like truthfulness, be it honesty, and everything like associated with that. So he talks about emphasis on scientific reasonability and kind of rational education. You may also as far as understanding his educational philosophy, you may also understand that he's underscoring that education is important to promote democracy. He's saying that time and again, that the democratic temper, in terms of celebrating the diversity that we have. It's not about democracy to his mind. It's not a game of numbers. It's not about majority kind of having an opinion and then kind of dominating the rest. Democratic behavior is for him, and through education, of course, is about kind of developing a fraternal framework where every individual is connected with the other, where there is no disparity as far as sex, gender, race, and other divisive barriers are concerned. So yes, we need to take into account how he evolves his educational philosophy, and if we read more into his life, we find that he's a very disciplined, very ferocious, very ardent student, researcher in his own self. He's starting educational institutions. He was a principal and a professor in his own life, and he conducted himself, and the kind of scholarship that he produced. So I think it's about a sense of combination, a kind of for a kind of knowledge, education, scholarship with a public-minded approach. Coming back, connecting to the masses. Rooted in struggle,
sacrifice, and excellence is something that we can always absorb from the life of Dr. B.R. Ambedkar as far as his educational philosophy is concerned. If we will look at, like, if we read about his ideas on curriculum, for example, we are increasingly talking about it in the context of new education policy. He believed that educational curriculum has to be pragmatic, focused on the practical utility of education. The way we are talking about skills these days, we are talking about values. So it has to combine all those characteristics, and curriculum should be based on changing needs of the society and be flexible. So if you are not kind of orienting ourselves to the changing needs, if we are not bringing in the most updated content, it may kind of diminish, it may bring down the real purpose of that. So he is talking about a curriculum, he's talking about, and he also, like, he's talk about flexible curriculum, not too much rigid, where, like, teaching learning process for him is not is about the confines of a classroom, but that I mean, it has to be like very active, dynamic, and ever evolving framework where he talks about. So if I'll talk about reforms that he proposes as far as the critique of educational system. In his lifetime, whatever was done by the British colonial government at that time, he was able to come up and critique that and propose an alternative framework. He was like for emphasis on scientific and rational education for national progress, and then his proposal for a common school system. Like how we sometimes the problem is aggravated because of the multiplicity of educational streams and boards. So he's talking about that if we have to sustain as a nation, it has to be all about like a kind of uniform sense of educational pattern and educational methodology, where all people in that sense connect to each other in a more harmonious way. So yes, his idea, when he talks about in the preamble of our constitution in the idea of equality, so I think he lives that in his ideas on educational philosophy also, as to how that curriculum part and then the structure part has to be equal, where like too much of state boards and central board and multiple other boards lead to confusion and then layers, and which sometimes block our ways of a sense of unity and harmony. So yes, if we talk about like how Ambedkar's role as an educationist, as a propounder, when we talk about his educational philosophy, he was very clear that when we are nurturing the needs of the students, it has to come through at all levels. And like for example, you will feel like that he as a mother, as a very expert kind of just like a very health as a very expert doctor would diagnose the problem and then suggest a remedy. So just like the doctor would always ask, what did you eat before he prescribes or he kind of assesses, he or she assesses a situation. So Ambedkar also, like in his educational philosophy, suggests that it has to be the students have to be guided appropriately about their career choices. It's like the kind of pattern that we have in the sense science and commerce and then humanities. It is perhaps not doing justice to the potential of our students. So lots of counseling has to be involved. He talks about scholarships. He's talking about hostels for underprivileged students, because they if they survive in a situation where their household situation is not very enabling for their studies, it is a problem. They perhaps cannot utilize all the instructions that they receive in the classroom. So beginning with counseling, beginning with
free ships, scholarships for their fee, and then hostels and living facilities, and uniforms. And then he talks about remedial coaching. He talks about if say some students in a classroom in a given situation, if they have some problems, teachers have to go all out to promote to kind of make sure that none of the educational instructions are ununderstood, and they are taken care of. So he also talks about what we are in the modern day scenario we are talking about, placement assistance. He's saying that post completion sense of connect has to be there, and is the in educational institutions, constant connection with the students. So it is important that he in his educational philosophy, he's taking care of every bit of it, whatever. I mean, no part is missed, no link is left unattended. This is important. I think that in the context, if we look at how his sense of agency about girl education, he talks about very he talks about how say girls education, and then we may look at how his emphasis on practical education and his role is in again, if we involve ourselves in too much theory, too much philosophizing about the education, it will not help. And he believed that education had a crucial role to play in the national building and in the development of a democratic society. So education as a means to foster a sense of national identity and unity. So I mean, again, I know if I may take you through how he identifies education as a tool, as an instrument, as a very holistic sense of agency of social change. It's basically, again, as if impact of Buddhism is there, where he talks about big apodipo bhava, where one has to become a complete autonomous personality, and where one has to kind of guide others also. And if everyone becomes enlightened, if everyone becomes educated, it will be easier to think of a world that we all the time dream about. This is important. He says that it's a powerful tool, and about it has the power to transform the ability and the potential of a person. If I talk about his role as a women education, if in the last couple of decades we have found a dramatic change, but I think it is because of his emphasis as to how women's education and if we have to achieve gender equality, social progress, it is important that educating women would help to break down patriarchal structures and promote women's empowerment. Universal education I talked about, and emphasis on reasoning and critical thinking, where he believed that education should encourage students to think critically and develop their own ideas. This is important. And importance on technical and vocational education. This is important that once school level part is done, it is students have to engage with technical and a more vocational side. And for example, IGNOU's model of education, where we always focus on skills, on vocations, on making our students life ready, skill ready. Ambedkar also emphasizes the same, where he talks about that kind of work when you study, that model where after school education, you are not supposed to kind of expect others to handhold and spoon feed you. It is about kind of starting that journey a little early, and so that you are able to kind of reach there faster. So this is important, that his emphasis on not towards it's not a case for a kind of gross commercialization of education. It's not. It's about, because that the human personality is about
fundamentally about creativity, skills, and so education has to kind of play that role where an inner creativity, inner skills come out and help the personality character of an individual. So this is important. If I may kind of talk about, like, when we are uh, discussing about Ambedkar's educational philosophy, it is important that we look at the kind of literature that he has left behind. He was very particular, like in the sense that whatever he was thinking, he was always documenting, and he was fairly objective. So again, like, adopting a universalistic approach, universalistic temper is important. So we have talked about scientific education, we have talked about everything else, all the aspects about curriculum, about universal. Why do we need to develop that idea and opinion and perspective? It is for the purpose that we are fundamentally global citizens. We have to we need to develop, inculcate that sense of ability to harmonize with all the forces of this ecosystem that belongs to us, and then in the process, kind of play a positive, pragmatic role. So that if you read his sense of directions that he took up during his scholarship, you find that he's expressing on almost every issue that was there, be it India's social life, the problems and traumas and turbulences that society was facing. And then he talks about, if you look at, he talks about the problem of partition, he talks about the problem of states and minorities, languages, for example. When we are discussing about his philosophy about education, it is also important that we take into account the aspect of language, where he lays emphasis on educational kind of mother tongue as the medium of instruction. This is important. I'll try to kind of conclude this, that his philosophy is crucial in 21st century, as it helps to shape the goals of education, inform teaching methods, ensure equity and inclusion, prepare the students for the challenges of the future, and promote lifelong learning. So in that sense, Dr. Ambedkar's ideas into modern education philosophy and his policies ensure equality and social justice. So with this, I think that we need to constantly kind of engage with this idea as to how this truly public, organic intellectual that we have, and the man who has shaped the kind of all sides, dimensions and prospects of modern India, how he thinks about. This is time that we engage with Dr. B.R. Ambedkar as a role model for educationists, as a person who was an educationist par excellence. We will continue to come to you with similar kind of engagements, with many more aspects like this. Today's lecture is basically broadly touching upon, but we can take up one issue and then touch upon various layers associated with that. For example, girl education and technical education. We can hold discussions. We'll do that in our future interactions. I would stop here and wish you a very happy, very eventful and meaningful Ambedkar Jayanti to all of you who are connected to this program. Thank you very much. Indira Gandhi National Open University, accredited with A++ grade by NAC
provides you a quality education in open and distance learning. School of Performing and Visual Art is offering a wide range of programs in performing and visual art. Certificate program in painting, certificate program in applied art, certificate program in Bharatanatyam dance, certificate program in Hindustani music, Carnatic music and theatre arts. बहुत यत्न करने के बाद भी नहीं पा सका। संजोग से मैं इस बार लेके आया हूँ। All the certificate programs are of 6 months duration with 16 credits. We offer 1-year diploma in theatre arts with 10 plus 2 eligibility criteria of 32 credits. The learners are exposed to various aspects of elements of drama, theatre games, acting techniques, scene work procedures, and they will also have the opportunity to take part in a classroom play production. We also offer bachelor's degree in Hindustani music. This program is duration of 3 years and learners are having the flexibility to complete this program over a period of 6 years. Apart from bachelor's, we also offer masters in drawing and painting with a duration of 2 years. Apart from certificate programs, degree, masters, we also offer PhD programs in performing and visual art with a specialization of visual arts, music, dance and theatre. Art is the perfect manifestation of every human being. So what you are waiting for? For online admissions, please visit our website www.ignou.ac.in. For more details, you can also contact Director, School of Performing and Visual Art, Block number 15G, IGNOU, Maidan Gadi, New Delhi. You can also reach us at sopva@ignou.ac.in. Happy learning! आश्रम के चूहे पकड़े। तुम तो सचमुच राधा लगने लगी। पता नहीं ये राजयोग कब तक रहे। It is so very exciting to connect with all of you as always. And I would like to begin with a warm sense of congratulations to all of you for this important broadcast centering on Ambedkar's philosophy of nationalism, as he's an icon of nationalism in a very distinct way. We are having this program in the backdrop of his birth anniversary. As you know that Dr. Ambedkar, in his mortal self, achieved so much for not only for one particular region, but for the whole country. In fact, his appeal, his kind of charm goes to almost every part of this world. So yes, it is important that when we celebrate his birth anniversary, we look at different aspects of his life, his vision, mission, contribution, and then we find that in the context of modern day situation where we find ourselves in the midst of very thick form of globalization, and like if you look at the term by Marshall McLuhan, where he talks about the idea of a global village and seamless, borderless, situations. I think that the idea of nationalism is still relevant in many ways, not in the context of what it used to be at one point of time, but again, like the way people criticize that how
the modern day concept of globalization is perhaps a sense of, some particular people, dominating the whole situation, and it's not a level playing field. So yes, if you look at how in the personality, Bharat Ratna, Dr. Baba Saheb Bhimrao Ambedkar, he kind of develops an idea of nationalism is crucial to us. I think if we find that Ambedkar's evolution as a public intellectual, as an organic kind of intellectual, you find that his perspectives on almost every domain, are very crucial. So today, we'll look at how he develops his premise. If I may broadly introduce that, how he was born in late 1890s, 1891 on 14th of April, and in view of his situation, and by the virtue of by the virtue of his training in very important institutions in India and then abroad, I must mention how he goes to England at that time, London School of Economics, and later on, a more liberal kind of, an upcoming situation in Columbia University, America. So you find that by the virtue of his exposure, and on one hand, remember, we cannot lose sight of the fact that, at that time India was under the colonial rule, and it was a very difficult time. At this point of time, I feel that we owe it to all our people who have given such important a mighty sacrifice for this moment when we are there in a free country, in a kind of liberated place. So yes, when Ambedkar was studying, it was like a situation largely governed by colonialism, and we that proverbial thing that the English sun never sets, that kind of situation. So you find that Ambedkar comes up, deals with, negotiates with the situation, and then I think we may, if we trace how he develops that kind of idea, you will find that he has a kind of orientation about his life and his personality, and his idea of how a nation has to look like is important. So again, if I may take you through that, his leadership of India's independence movement was centered on a single goal: to use political influence to bring about the socio-economic emancipation of the underprivileged sections. As a symbol of social justice, he played a significant role in roundtable conferences to safeguard the underprivileged. So in the if I may mention that, in the plenary session of the first roundtable conference, he fought for the safeguarding of the socially marginalized in the Constitution of India, and he demanded separate electorate for the untouchables. So, if I may talk about that, if I may refer to all the philosophers who have talked about nationalism, it is not relevant to talk about Elie Kaduri, who talks about nation as a very material principle. But I think it is important if we focus on how Ernest Renan, for example, talks about a nation being a spiritual principle, where he does not talk about, for example, elections taking place after 5 years and then governments are being appointed. I think is Ambedkar, is closer. His concept of nationalism is closer to everyday interaction with among the citizens of the country. So again, I know if you go back to the Constitution preamble, where you find those important words: liberty, equality, fraternity,
and combined with justice. So again, you'll find that not many people have talked about the term fraternity. So India, when if we look at how Gandhi, for example, took back his protest and movement when Chori Chora happened, when violence took over and British, that police station was burnt and people died because of that. So you find that I think when Ambedkar talks about his sense of this how this country will look like once the outside colonizer is gone, he's very concerned at how this nation will look like. So ever since like he comes into the picture, he's like, if I may narrate a situation where in like when Britishers introduced a place for the Indian inhabitants in the cabinet, in the viceroy's cabinet, he was the first one that it has to be this representation has to be on the basis of their population. I mean, Indian people should fight for, should kind of make a case for that. If we are being governed, we should have our representatives in that system. So that tendency, that unique and kind of autonomous thinking that you have, so it's about like how various aspects within a nation will be governed. Again, like if you read about fraternity part, we find that his idea of fraternity is different in the sense that he's saying that unless people are connected in their hearts, people have a common will and a common sense of alliance, kind of affinity in their hearts. It is not that for a specific goal or purpose they are doing it. If all the citizenship, I think that the whole idea of citizenship also needs to be understood when we are discussing Ambedkar's idea of nationalism. Nation, citizenship, sense of equality, where everyone is equal, where everyone is having equal rights and equal stake in the making of a country, in the running of a country, in the rights, and rights and privileges, like he talks about that. Like when there was an argument at that time, and when our nation got free, when Britishers were thrown away from power, like that perhaps we don't need a constitution. Perhaps why do we allow everyone in this country to cast the votes? Why do we have government's investment in public education, public health, and various other development welfare activities? So it is again Ambedkar's emphasis, Ambedkar's idea of nationhood that comes to the fore, and you find that his emphasis, 1930s he is talking about annihilation of caste. You see, if you read that treatise, we find that is essentially his statement on what kind of nationalism that we need to have and what we deserve. In the sense that I would make a case that if you learn, if you read through all his narratives, maybe who were the Shudras, and then talks about states and the minorities, you find that he is all about ensuring that the nation is all about compassion, a sense of well-being. Like if one citizen is having a problem, the other person should be worried, not only concerned, worried, but agitated also for the kind of restoration of the other person's well-being. This is important. Well, annihilation of caste is that where he talks about the problem, where he talks about the social stratification and the divisive kind of mindset that in society seems to have developed. And then he talks about if this nation has to survive, if this nation has to get a kind of sanctity and legitimacy, then this system has to go. The kind of interaction between individuals at all levels has to be ensured. So yes,
I mean, when we are talking about his, role, ideas, philosophy of nationalism, and as an icon of nationalism, it is important that is not is not about I mean talking about inclusion in a very passive sense. He's talking about inclusion as a very important agenda, where he talks about participation, where every individual would come out and make a claim on not only as an individual, on the part of the ancestors also. So you will find that in a country where we live in, we find that there are issues, and when reservation was introduced in education, in employment, in the political front, this was the real purpose. This was the real, again, that became a tool for nation building for him. At that time, there was no other way. So it met a lot of resistance. It was not easy for him, but I think it calls for a special credit for this important person that we are discussing, that he was able to encourage everyone and bring them on the same front, where we could think about a nation in the real sense, where when the constitution, when the first Republic Day, when we say 26th of January 1950, we can claim that on that day every person is declared. Of course, he talked about in the Constituent Assembly debates, like when we that we enter in 1947, that we enter an era of contradiction, where perhaps we are politically equal, but socially and economically there is a sense of disparity. So this is important, and I think that goes to kind of talk about, that goes on to take us that underscores his sense of nation, his sense of inclusion, his sense of bringing people on the same level, and no disparity. So if we for example, what is his, if I may take you to quotation on what is his nation idea: feeling of oneness, the consciousness of a common heritage, consent and desire to live together. And the most, these are the attributes, So it is not enough to have just a politically independent country. What is also needed to have an independent nation where every citizen, this is what I have been emphasizing, will have religious, political rights, so that every person will have equal opportunity to develop. This is a fundamental sense, that that sense of equality, liberalism, sense of justice, and that fraternity. This forms the core, and I think it kind of gives him a rank above all philosophers, in the sense that they came and theorized about this, they propounded some ideas. You find in the legal domain, social domain, and the philosophical domain, you'll find several important ideas. I talked about Elie Curie and Ernest Renan. You can go back to, say, Aristotle and Plato about this. But I think what gives more kind of authority, that he not only theorized about it, but he lived that, he performed that thing. And you may say today, like when in the after 75 years of in independence, we look at and we look back, say, of what has happened. You see, if you read through the editorial during that time in 1940s, many people were very skeptical about India's India as an independent nation. They were very doubtful that we will be able to hold this nation together. But I think it is because of his idea. It is because of Ambedkar's unique sense of vision, that each citizen should get equal rights. So if you get equal rights, you will have a claim. All those countries, we can do a survey, in our neighborhood also, how their idea of citizenship could not
be secured, and as a result, there was a sense of deterioration. I mean, partition and everything happened, and there are problems. There, but because Ambedkar's idea of nationalism, made sure that with a spirit of compassion, with a spirit of fraternity, this liberty and equality and justice, this everything comes together, and he so in that sense, we can say that these 75 years are largely in a very distinct way in an outcome of Ambedkar's idea of nationalism, where people in terms of the kind of diversity that we have. I mean, it is in be it linguistic diversity, be it cultural diversity. If we find that it was very difficult, when he talks about a strong center, when he talks about and equal powers to states also, and involving everybody else in the decision making process. So this is central, and I think that this idea of where nation is not oppressive, where nation is not something which is an external principle. Nation is something that resides within the hearts and kind of minds of people. That is central. So if you look at his idea of the kind of nation and nationalism, we look at for example, inspiration to the marginalized and oppressed communities, a lifelong fighter for, when I say Dalit liberation, it is about the marginalized and underprivileged. He inspired and motivated socially marginalized classes. We find that again his life is a chapter and in social justice, and kind of to drive away all injustices and all disparities that we have suffered. So symbol of India's commitment to democracy and secularism, a powerful critique of the caste system. I talked about his important text, Annihilation of Caste. He constantly fought for equal rights for all sections of our society. So I think is again we have his sense of nation is about social justice, where kind of be it all you can always talk about when this is announced, declared in a very dynamic way right in the beginning, in the preamble, that the state shall not discriminate on the basis of caste, class, color, gender. So that is very I think that justice was something that at that time, because of multiple reasons and then colonial rule at that time, so it was imperative for him to kind of define the contours of nationalism at that time, and I think his idea of social justice, and he fought for this. So for example, if you read about who were the untouchables, so and he was a bit critical also about in his lifetime, when he felt like you would remember that during the Pune Pact, you will find that he on the first roundtable conference, he was about self kind of that separate franchise for Dalits, and a kind of self-determination thing also. So in that sense, here when he saw that the problems were not addressed in a very meaningful way, so he was very critical at that time, and he used all his force, and then he also from his side, on the social front, on the intellectual front, he was writing literature, and if you all these texts, for example, collected works and speeches, has all the volumes. So he's talking about education, but his idea, I think is most relevant in 21st century, where we are talking about a world where a sense of connectedness has to be there among all the citizens. So yes, so in that sense, I think that
his idea, definition of nationalism is rooted in equality, and kind of where state has to play a role, where state has to be be an avant-garde in kind of ensuring that the agency that of a nation is available to almost every person. So again, this is central. Like if I take down about his ideas about caste system, where he says that caste disorganizes and demoralizes the Hindu society. Again, he talks the destruction of the belief in the sanctity of the Shastras is essential if India has to become modern, progressive, and a moral nation. So again, this is important that in 1950s he is talking about a very progressive and the moral side of it. So this is central, like in the sense that I mean, this may sound little philosophical and little abstract, but if you look at the kind of initiatives, social initiatives, educational initiatives, political initiatives, be it, for example, the media-related, journalism-related initiatives, Mook Nayak, Bahishkrit Bharat, and then Janta, and then you have his educational initiatives where he is kind of starting public institutions, for the advancement of people's educational fulfillment of people's educational needs. So this is important, that and we find that I think fundamentally, like his vision that of nationalism reflects. I mean, when he got the opportunity to as the chairman of the drafting committee of Indian Constitution, and he declares that I think, like I mean, that this place belongs to everyone. This this nation belongs to each and every one of us, and which enshrines the principle of democracy, secularism, social justice, and all citizens regardless of their social. And you will be like again his idea is of nation. If you look at this sentence, that I will be the first one to burn it. It goes on to show that the idea of nation is not external, is not something written on a piece of paper, is not something that is that someone has to show. It is it is inner, it is in our mind and hearts, and it has to be lived. It has to be a lived reality. So that is important. So I mean, if may say that Ambedkar's role as a nationalist is of great significance today, when we have to chart our way in 21st century as a knowledge superpower in this world. I think Ambedkar's idea on nationalism to safeguard the interests and kind of needs of every individual in this country, irrespective of the disparities. It is important that. So yes, what we can do today, for example, as far as legacy is concerned, so is important as a reformer, rationalist, architect of Indian Constitution, and we can read through, I mean, we have discussed it in some way, annihilation of caste, thoughts on Indian states and partition or Pakistan or partition of India, who were the Shudras, states and minorities. So you can also, like, if I may conclude that, he fought for the emancipation, upliftment of socially backward classes, and in his political and academic work, he was there for this. So if on a concluding note, if I may say that his message, his idea, his kind of unique contribution to the nationhood is that nation is a lived reality. It is not about geography. It is about a perspective where people connect to each other, live harmoniously, and contribute to the making of a more healthy,
framework where humanity flourishes. We'll come back with similar ideas, where maybe we'll discuss one of these works in greater detail as to how this idea of nationalism unfolds even further in one of our future programs. Thank you for your sense of this attendance and sense of like this active engagement with IGNOU's all educational broadcast. I would like to wish you a happy and meaningful Ambedkar Jayanti to all of you once again. Thank you very much. Dear learners, welcome to IGNOU. You're going to lead with a difference. So how do you lead with the difference? The unique attributes of the university system through which you're going to go for the management program or any other program is the multiple entry and exit. It provides flexible learning where a learner can learn at its own will and at its own pace. It offers multimodal approaches. Like we have MBA, the normal through the distance learning mode and through online mode. So it has a multimodal approach. It has face-to-face counseling. It offers web counseling also. It gives interactive satellite-aided communication network through teleconferencing, and it also gives the radio counseling also. When we talk about School of Management Studies, it was the first school and it had the pioneer program of diploma in management. Till date, it has been offering around 14 programs in management and 13 programs in commerce disciplines. The school has international presence as well, as it provides the programs in specific Asian and African countries across the globe. Now talking about Master of Business Administration. What are the objectives? What are the learning objectives of this Master of Business Administration? What are the unique features of this Master of Business Administration, which IGNOU is offering? Let us see the program at a glance. The program name is MBA. नमस्कार। स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड न्यू मीडिया स्टडीज़ के इस टेली कॉन्फ्रेंसिंग सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा विषय है कैमरा ऑपरेशंस या कैमरा संचालन। हमारे कई प्रोग्राम जैसे पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, एमए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, पीजी डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एमए इन जर्नलिज्म एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मुख्य रूप से ये 4 ऐसे कार्यक्रम हैं जहां कैमरा ऑपरेशंस या कैमरा संचालन की बात की गई है, थ्योरी कोर्सेज में बात की गई है, प्रैक्टिकल कोर्सेज में बात की गई है। तो यह कार्यक्रम जो है मुख्य रूप से एमए जेएमसी पत्रकारिता एवं जनसंचार में एमए और पत्रकारिता एवं जनसंचार में पीजी डिप्लोमा हिंदी माध्यम के छात्र छात्राओं के लिए इसको ये निर्धारित है, ये बनाया गया है, उनके लिए उपयोगी होगा यह सेशन,
क्योंकि कैमरा संचालन या कैमरा ऑपरेशंस को हम कौन कौन सी गतिविधियां इसमें शामिल है, किस प्रकार से कैमरा ऑपरेशंस या कैमरा संचालन किया जाता है, या और भी इससे संबंधित बहुत सारे पहलू जो हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझें कि जैसे लिखित भाषा होती है, रिटन लैंग्वेज, लिखित भाषा जो होती है, उसमें शब्द होते हैं। उन शब्दों को मिल के वाक्य बनते हैं। वाक्यों के मिलने से पैराग्राफ या अनुच्छेद बनते हैं। फिर कई अनुच्छेदों को जब हम मिलाते हैं तो पूरा पाठ बनता है। वो पाठ कुछ भी हो सकता है। वो पाठ एक लेख हो सकता है, वो पाठ एक कहानी हो सकता है, एक उपन्यास हो सकता है। तो अलग अलग फॉर्मेट, अलग अलग प्रारूप में हम भाषा का प्रयोग करते हैं। मैंने ये लिखित भाषा के बारे में बात की। उसी प्रकार जैसे लिखित भाषा में हम ले लें कि शब्द हैं। शब्द छोटी सी मीनिंगफुल इकाई को हम शब्द बोल सकते हैं। उससे अक्षर भी होते हैं, लेकिन अक्षर से वो अर्थ नहीं निकल के आ पाता है। तो शब्द सबसे छोटी मीनिंगफुल इकाई होते हैं। फिर शब्दों को मिला के जब हम वाक्य बनाते हैं तो उसके कुछ नियम होते हैं, उसको हम व्याकरण कहते हैं। तो उस व्याकरण के नियमों को अगर हम अच्छे से जानते हैं तब हम शब्दों को मिलाकर अर्थपूर्ण वाक्य बना सकते हैं, अर्थपूर्ण अनुच्छेद बना सकते हैं और अर्थपूर्ण पूरा पाठ बना सकते हैं, जो हमारे पाठकों को बहुत बेहतर तरीके से, आसानी से और समझ में आए और उनको रुचिकर भी लगे। यही सारा प्रारूप और यही सारे प्रावधान दृश्य भाषा में भी है। दृश्य भाषा जिसको हम विजुअल लैंग्वेज बोलते हैं, और दृश्य भाषा का भी अपना व्याकरण होता है जिसको हम विजुअल ग्रामर भी बोलते हैं। तो दृश्य भाषा का अपना व्याकरण होता है। दृश्य भाषा में भी शब्द के जैसे कुछ चीज़ें होती हैं, फिर उनको मिलाकर वाक्य बनाए जाते हैं, फिर वाक्यों को मिलाकर अनुच्छेद बनाए जाते हैं और इस ढंग से पूरा पाठ बनता है। तो दृश्य भाषा का भी एक व्याकरण है, और उस व्याकरण को जब हम समझते हैं, एक जनसंचार, पत्रकारिता एवं जनसंचार के छात्र या छात्राओं के लिए आवश्यक है कि वो दृश्य भाषा के इकाइयों को समझे, नंबर एक। फिर दृश्य भाषा के व्याकरण को समझे, और जब वो दृश्य भाषा के व्याकरण को अच्छे से समझेंगे तभी वो दृश्य भाषा के माध्यम से अपनी कहानी बहुत अच्छे तरीके से कह पाएंगे। यदि आप दृश्य भाषा को, जैसे आप लिखित भाषा को अगर बेहतर तरीके से समझेंगे, जानेंगे, उस पर आपका अधिकार होगा, तभी आप अपनी कहानी या अपना संदेश या अपना कंटेंट आप लिखित भाषा में प्रस्तुत कर पाएंगे प्रभावशाली तरीके से। बिल्कुल उसी प्रकार से दृश्य भाषा पर भी ये सारे नियम लागू होते हैं। यदि आप दृश्य भाषा को समझते हैं, आप दृश्य भाषा को बेहतर तरीके से जानते हैं, उस पर आपका अधिकार है, तभी आप अपना संदेश, अपनी कहानी, अपना कंटेंट दृश्य भाषा के माध्यम से प्रभावशाली तरीके से, प्रभावकारी तरीके से आप अपने दर्शकों तक पहुंचा पाएंगे। तो इसलिए दृश्य भाषा को समझना बहुत आवश्यक है। जैसे अगर हम शब्द से तुलना करें तो दृश्य भाषा में जो, जैसे मैंने कहा कि अक्षर होते हैं, तो कई अक्षर मिलके शब्द बनते हैं। उसी ढंग से दृश्य भाषा में फ्रेम्स होते हैं और कई फ्रेम मिलकर शॉट्स बनते हैं। शॉट्स को आप मान सकते हैं कि वो एक मीनिंगफुल सबसे छोटी इकाई है। फिर शॉट्स के मिलने से फिर सीक्वेंस भी बनता है, और फिर सीक्वेंस शॉट्स, कई शॉट्स मिलके सीन बनता है, और फिर कई सीन्स मिलके सीक्वेंस बनते हैं, और कई सीक्वेंसों के आधार पे वो पूरी कहानी कही जाती है। तो आज के इस सत्र में हम कैमरा ऑपरेशंस यानी कैमरा संचालन हम कैसे करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक होती हैं, और कैमरा का बहुत सीधा संबंध दृश्य भाषा के व्याकरण से भी है। क्योंकि अगर हम दृश्य श्रव्य माध्यम में कार्यक्रमों को देखें, ऑडियो विजुअल मीडियम में अगर हम कार्यक्रमों को देखें, तो वो पूरी कहानी, वो पूरा संदेश, वो पूरा कंटेंट कैमरे की आंखों से ही दिखाया जाता है। तो जब आप कैमरे का संचालन करते हैं तो दो चीज़ें होती हैं। कुछ तो चीज़ें टेक्निकल होती हैं कि कहाँ स्विच है, कहाँ रिकॉर्डिंग का स्विच है, कहाँ से आप लेंस यूनिट बदल सकते हैं, कैसे आप जूम कर सकते हैं। अलग अलग इक्विपमेंट होते हैं जो अलग अलग कैमरा मूवमेंट को हेल्प करते हैं। डॉली होती है, क्रेन होता है।
तो ये सारी चीज़ें एक तकनीकी पहलू है जो कैमरा संचालन के लिए आवश्यक है। दूसरा जो एक सौंदर्यपरक पहलू है, या आप उसको कहें कि जो कंटेंट से रिलेटेड पहलू है, वो भी बहुत आवश्यक है कैमरा संचालन में, कि हम कैसे कितने तरीके के शॉट्स होते हैं, कौन से शॉट साइजेस हम किन उद्देश्यों के लिए बनाते हैं। कैमरा को अगर हम मूव करते हैं, कैमरा का जो मूवमेंट है उनका पर्पस क्या होता है, कौन सा मूवमेंट किस पर्पस के लिए, किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त कैमरा एंगल्स क्या है, इन एंगल्स का अर्थ क्या होता है, कैसे एक ही चीज़ को अलग अलग कैमरा एंगल से शूट करके हम अलग अलग अर्थ पैदा कर सकते हैं या अलग अलग अर्थ उसमें डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और कैमरा संचालन में बहुत आवश्यक है एक मास कम्युनिकेशन के छात्र छात्राओं को जानना। तो आज हम उन सारे विषयों पर चर्चा करेंगे, एक एक कर हम विषय लेंगे। पहला शॉट साइजेस की हम बात करते हैं कि जो शॉट, जैसा मैंने कहा कि सबसे बेसिक यूनिट, सबसे मूलभूत इकाई जो दृश्य माध्यम में होती है वो फ्रेम होती है, और कई सारे फ्रेम मिलके शॉट बनते हैं। शॉट को अगर आप देखें तो शॉट मुख्य रूप से जब से जहाँ कट लग जाए, वो ड्यूरेशन, कैमरा ने शूट प्रारंभ किया और जहाँ कट लग गया वो पूरा वो फुटेज होता है वो शॉट के रूप में होता है। और कई शॉट्स मिलके हम सीन बनाते हैं, फिर कई सीन्स मिलके सीक्वेंस बनते हैं। तो जैसे कि लिखित भाषा का अपना एक व्याकरण है और उनका अपना सिंटैक्स है, उनकी अपनी एक उनका पूरा प्रारूप है, वैसा ही दृश्य भाषा में भी पूरा प्रारूप होता है। अब हम शॉर्ट साइजेस की बात करें तो आपने बहुत लोकप्रिय तरीके से शॉर्ट साइजेस के बारे में सुना होगा, क्लोजअप सुना होगा, मीडियम शॉट सुना होगा, लॉन्ग शॉट सुना होगा। तो शॉर्ट साइजेस में जो हमारा ऑब्जेक्ट है या जिसको हम सब्जेक्ट है, वो फ्रेम का कितना बड़ा हिस्सा वो कैप्चर कर रहा है, कितने बड़े हिस्से में वो उसकी उपस्थिति है, इसका संबंध शॉर्ट साइजेस से होता है। मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से शॉर्ट साइजेस 3 प्रकार के होते हैं। अगर हम बहुत मेजर शॉर्ट साइजेस की बात करें तो एक तो क्लोजअप होता है, ठीक है, दूसरा मीडियम शॉट होता है और तीसरा लॉन्ग शॉट होता है। लेकिन इन 3 मुख्य शॉट साइज़ों को भी के बीच में भी कई डिफरेंट टाइप के शॉर्ट साइजेस होते हैं। बहुत सारे शॉर्ट साइजेस इनके बीच भी होते हैं। तो अगर हम देखें जो आपके यूनिट MJM027 जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का आपका कोर्स है, या PG डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन का कोर्स है, या MA इन जर्नलिज्म एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन का कोर्स है, आप अपने यूनिट में देखेंगे तो वहाँ पे आपको 7 अलग अलग प्रकार के शॉर्ट साइजेस की बात की गई है। तो ये जो 7 शॉर्ट साइजेस हैं मुख्य रूप से ये जैसे क्लोजअप और मिड शॉट के बीच का भी एक है, तो उस ढंग का क्लासिफिकेशन है, उस ढंग का वर्गीकरण है। लेकिन मुख्य रूप से 3 प्रकार के शॉर्ट साइजेस होते हैं, क्लोजअप, मीडियम शॉट और लॉन्ग शॉट। अब हम यहाँ देखें तो पहला तो है एक्सट्रीम क्लोजअप, जिन हम 7 शॉर्ट साइज़ों की बात करते हैं। एक्सट्रीम क्लोजअप जिसका शॉर्ट फॉर्म ECU भी है। दूसरा क्लोजअप है जिसको हम CU भी बोलते हैं। तीसरा मीडियम क्लोजअप है जिसको हम MCU बोलते हैं। फिर मीडियम शॉट है जिसका शॉर्ट फॉर्म MS है। फिर मीडियम लॉन्ग शॉट है जिसको MLS भी बोलते हैं। फिर लॉन्ग शॉट है जिसको LS भी बोलते हैं, और एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट है जिसको ELS भी बोलते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि एक्सट्रीम क्लोजअप और क्लोजअप ये क्लोजअप के ही हिस्से हैं, और मीडियम क्लोजअप जो है वो मीडियम शॉट और क्लोजअप के बीच की चीज़ है। फिर मीडियम शॉट है। फिर मीडियम लॉन्ग शॉट जो है वो मीडियम शॉट और लॉन्ग शॉट के बीच की चीज़ है। फिर लॉन्ग शॉट का ही एक और हिस्सा एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट है। तो इन सारे प्रकार के शॉर्ट साइजेस जो हैं वो उनको हम अभी चित्रों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। और इन सभी शॉर्ट साइज़ हैं,
इनका इनका जब हम प्रयोग करते हैं तो उसका एक उद्देश्य होता है। हम केवल अपने मर्जी से या अपने मज़े के लिए इन शॉर्ट साइजेस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हर शॉर्ट साइज़ का एक अर्थ होता है। शॉर्ट साइजेस पे चर्चा करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि एक मान लीजिए कि एक बच्चा अकेला रोड पे बैठा हुआ रो रहा है, वो खो गया है और आप इसको अपने कार्यक्रम में ये दिखाना चाहते हैं, भले वो न्यूज़ का कार्यक्रम हो या कोई और कार्यक्रम हो, और आप एक एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट ले रहे हैं या लॉन्ग शॉट ले रहे हैं जिसमें दिख रहा है कि वो बच्चा बैठा हुआ है सड़क के किनारे और वो रो रहा है। क्या आपको लगता है कि आप एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट लेंगे जिसमें वो सड़क भी दिखेगी, आसपास की बिल्डिंग्स भी दिखेगी, उसमें वो बच्चा वहाँ पे बैठा हुआ भी दिखेगा? इस शॉट से अगर आप दर्शकों को बताना चाहेंगे कि वो बच्चा रो रहा है, तो क्या आपको लगता है कि आपका आपका जो शॉट है वो आपका मैसेज कन्वे कर पाएगा, वो दर्शकों को बता पाएगा कि बच्चा रो रहा है? आप ठीक है, आप वॉइस ओवर ऐड कर सकते हैं, वहाँ पे डाल सकते हैं कि ये सड़क किनारे बैठा बच्चा रो रहा है, लेकिन क्या वॉइस ओवर को ऐड करके ये बताने से कि वो बच्चा रो रहा है या कष्ट में है या दर्द में है, क्या आप अपेक्षित परिणाम और अपेक्षित प्रभाव जो आप चाहते हैं कि आप दर्शकों पे डाल पाए, वो क्या आ पाएगा? बिल्कुल नहीं आ पाएगा। तो इसके लिए क्या है कि अब आप समझें कि अगर आप क्लोजअप दिखा रहे हैं, उस बच्चे का फेस दिख रहा है, उसके आंसू दिख रहे हैं, उसके चेहरे पे जो दर्द है वो अगर दिख रहा है, और ये इस शॉट के माध्यम से जब ये कहानी दर्शकों तक आप पहुंचा रहे हैं, तब जो दर्शकों पर प्रभाव पड़ेगा वो एक लॉन्ग शॉट में वॉइस ओवर के थ्रू ये बता के कि बच्चा रो रहा है, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो इसलिए मैंने कहा कि हर शॉट साइज जो शॉट्स हैं हमारे, ये सातों शॉट्स, इनके प्रयोग का उद्देश्य होता है और उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। अब जैसे एक्सट्रीम क्लोजअप है, एक्सट्रीम क्लोजअप मुख्य रूप से क्लोजअप को ही जब आप और एक्सट्रीम करते हैं, क्लोजअप में जो हिस्से होते हैं उन्हीं के एक और पोर्शन को अगर आप और ज़्यादा आप टाइट शॉट बनाते हैं तो वो एक्सट्रीम क्लोजअप होता है। एक्सट्रीम क्लोजअप का मुख्य उद्देश्य जो है वो चेहरा के किसी हिस्से या किसी पोर्शन पे जो गतिविधि हो रही है उसको दिखाना है, या फिर केवल ज़रूरी नहीं है कि हर शॉट में कोई व्यक्ति ही हो, शॉट्स में दूसरी चीज़ें भी हो सकती हैं। तो अगर आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ दिखाना चाह रहे हैं, यदि आप न्यूज़ में हैं और आप दिखाना चाह रहे हैं कि कोई एक क्राइम हुआ है और उसका कोई एक एविडेंस है, तो आपने क्लोजअप दिखाया, उसमें वो एविडेंस दिखाया, अगर उस एविडेंस की कुछ डिटेल्स कुछ मीनिंग कन्वे कर रही है, तब आप एक्सट्रीम क्लोजअप की ओर जाते हैं और उस शॉट के माध्यम से उस एविडेंस पे जो डिटेल्स हैं उन डिटेल्स को दर्शकों तक बताते हैं। अब कोई लॉकेट पड़ा हुआ है, लॉकेट कोई एविडेंस है किसी क्राइम का, और आप दिखाना चाह रहे हैं कि उस पर किसी एक्यूज का नाम है, तो आपको एक्सट्रीम क्लोजअप के लिए जाना पड़ेगा और तब आप दिखा पाएंगे कि अच्छा लॉकेट तो है, लॉकेट के अंदर भी किसी का नाम है या कोई सिंबल बना हुआ है। तो एक्सट्रीम क्लोजअप का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा क्लोज जाके डिटेल्स दिखाने के लिए होता है। आपने दिखाया कि किसी की स्माइल दिखाने के लिए हो सकता है, किसी की आँखों में जो भाव है, आपने एक फेस का क्लोजअप दिखाया, लेकिन अब आप आँखों पे एक्सट्रीम क्लोजअप के माध्यम से दिखाना चाह रहे हैं, किसी की मुस्कुराहट दिखाना चाह रहे हैं, तो इन सब कारणों, इन सब उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक्सट्रीम क्लोजअप का इस्तेमाल होता है। आंखों से आंसू बह रहे हैं या आंसू सूख गए हैं या आंखों में कोई ऐसी हलचल हो रही है जो कुछ मीनिंग, कोई डर की, खुशी की कुछ मीनिंग कन्वे कर रही है, कुछ अर्थ बयां कर रही है, तो उन सब उद्देश्य, उन सब कारणों में, उन सब परिस्थितियों में हम एक्सट्रीम क्लोजअप का इस्तेमाल करते हैं। तो एक्सट्रीम क्लोजअप फेस का या किसी फेस का कोई पोर्शन पे हम फोकस करते हैं, उसका टाइट शॉट लेते हैं, या फिर हम किसी भी चीज़ की बहुत पास जाके कोई डिटेल हमें बतानी है, उसके लिए हम एक्सट्रीम क्लोजअप का इस्तेमाल करते हैं। जो एक सामान्य क्लोजअप शॉट होता है वो आपके पूरे फेस को कवर करता है और उसके थोड़ा नीचे एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब कैमरा ऑपरेशंस या कैमरा संचालन की हम बात करते हैं, तो जब भी आप कोई भी शॉट फ्रेम करें तो एक बहुत ही मूलभूत आधारभूत नियम है कि प्राकृतिक जो कट हैं मनुष्य के शरीर के,
उन कट्स पे आपका शॉट एंड नहीं होना चाहिए। उन कट्स पे ही आप अपने शॉट को कंप्लीट नहीं करें, एंड नहीं करें। जैसे प्राकृतिक कट है, जैसे गर्दन बिल्कुल एक प्राकृतिक कट यहाँ आप लेंगे तो ये प्राकृतिक कट है। बिल्कुल जो शोल्डर्स हैं, जो कंधे हैं, वो प्राकृतिक कट है। फिर हमारे कमर जो है वो बिल्कुल प्राकृतिक कट है। फिर जो घुटना है वो प्राकृतिक कट है। तो ये इन प्राकृतिक कटों पे आपको शॉट ख़त्म नहीं करना है। जब शॉट फ्रेम कर रहे हो तो ये शॉट यहाँ नहीं ख़त्म होना चाहिए, इससे थोड़ा नीचे होना चाहिए। जो हमारे प्राकृतिक कट हैं शरीर के, उससे थोड़ा नीचे या थोड़ा ऊपर आपको कोशिश करनी चाहिए शॉट्स को फ्रेम करने की। तो कोई शॉट यहाँ नहीं फिनिश होगा, एंड होगा, वो यहाँ होगा, थोड़ा नीचे होगा। बिल्कुल कंधों पे नहीं होगा, कंधों से थोड़ा नीचे होगा। बिल्कुल कमर पे नहीं होगा, कमर से थोड़ा ऊपर या कमर से थोड़ा नीचे होगा। बिल्कुल घुटनों पे नहीं होगा, घुटनों से थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे होगा। इसके पीछे जो इस मूलभूत नियम के पीछे जो कारण है, वो कारण मनोवैज्ञानिक कारण है। मनोवैज्ञानिक कारण यह है कि जब आप बिल्कुल प्राकृतिक कट्स पे अगर आप शॉट को फ्रेम कर देते हैं, वहीं पे कट कर देते हैं उसको, तो एक कंटिन्यूटी की भावना, जैसे अगर यहाँ आपने शॉट को फ्रेम किया है, यहाँ तक लिया है, तो ये लगता है कि अच्छा ये सर जो है ये कंटिन्यूटी में आगे जा रहा है, इस ढंग की फीलिंग होती है। आप बिल्कुल यहाँ कट कर देंगे तो एक ऐसी फीलिंग आती है जैसे ये यहीं तक है, आगे कंटिन्यूटी में शरीर का हिस्सा नहीं है। तो ये एक मनोवैज्ञानिक पहलू है, और इस नियम का पालन जब भी हम शॉट फ्रेम कर रहे हों कैमरे का उपयोग करके, तो उसको करना चाहिए। तो क्लोजअप आप देख रहे हैं, क्लोजअप बहुत उपयोग में आता है एक्सप्रेशन शो करने के लिए, भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, आपकी फीलिंग्स, मुस्कुराहट, दर्द, खुशी, गुस्सा, डर, घबराहट, इन सब तरह की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए क्लोजअप का इस्तेमाल होता है, जहां हमारा सब्जेक्ट ह्यूमन होता है। इसके अतिरिक्त क्लोजअप का इस्तेमाल बाकी जगहों पे अगर हम दूसरे ऑब्जेक्ट्स को दिखाने के लिए कर रहे हैं, तो जिन चीज़ों को हम डिटेल से दिखाना चाहते हैं, उनकी गतिविधियों का डिटेल दिखाना चाहते हैं, तो वहाँ हम क्लोजअप का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर मान लें कि आप एक उदाहरण ले लें कि आप एक कुकरी शो को शूट कर रहे हैं, और वहाँ आपने दिखाया कि कढ़ाई में आपने कुछ चीज़ें मिलाई, और जब ये इस ढंग का लाल होने लगे तब आपको गैस बंद करना है, ये चीज़ है। तो यहाँ पे आपको उस कढ़ाई का क्लोजअप दिखाना पड़ेगा कि उस कढ़ाई में लाल कैसा हो जाए, तब आपको गैस बंद करना है। तो क्लोजअप का इस्तेमाल जहाँ पे डिटेल्स देनी है, वहाँ पे उन जगहों पर, उन परिस्थितियों में हम करते हैं। इसके बाद एक मीडियम क्लोजअप है, जो कि क्लोजअप और मीडियम शॉट के बीच का एक शॉट है। इसमें कंधे से थोड़ा नीचे आप शॉट को फ्रेम करते हैं, और ये इसका उद्देश्य भी वही ऑलमोस्ट है जो क्लोजअप का है, जहां आप भावनाएं व्यक्त करना चाहते हैं, कुछ एक्सप्रेशन शो करना चाहते हैं, कुछ डिटेल्स दिखाना चाहते हैं, वहाँ इसका इस्तेमाल होता है। अब एक मीडियम शॉट है। इस मीडियम शॉट को आप यहाँ आप देखें तो ये कमर के नीचे फ्रेम किया गया है। कमर से, तो मैंने जो आपको बताया कि नेचुरल कट्स पे शॉट हमारा एंड नहीं होना चाहिए। कमर से थोड़ा ऊपर भी मीडियम शॉट हो सकता है, कमर से थोड़ा नीचे भी हम मीडियम शॉट ले सकते हैं। मीडियम शॉट में डिटेल्स तो हैं ही, एक्सप्रेशन तो हैं ही, साथ ही मीडियम शॉट एक कॉन्टेक्स्ट भी शो करता है। कॉन्टेक्स्ट शो कर रहा है यानी संदर्भ यानी आपका कैरेक्टर कहाँ है। कुछ एक्शंस के लिए भी ये रूम बनाता है। ठीक है, आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, आप कुछ लिख रहे हैं, आप कोई काम कर रहे हैं, वो किस कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं, किस संदर्भ में कर रहे हैं। संदर्भ मतलब कौन सा स्थान है। आप कमरे में हैं, अपने घर में हैं, अपने ऑफिस में हैं, आप सड़क पे हैं, आप रेलवे स्टेशन पे हैं, तो उनके लिए भी स्कोप बनता है मीडियम शॉट में। ओके कि थोड़ी सूचना संदर्भ या जो स्थान है, जो कॉन्टेक्स्ट है, उसके बारे में भी मिलती है, और साथ ही जो आपकी गतिविधि है, जो आप कर रहे हैं, उनको, उन चीज़ों को दिखा सकते हैं। आप कोई लिख रहे हैं, आप ऑफिस में बैठ के आप अगर एक कोई नोट लिख रहे हैं, कोई एप्लीकेशन लिख रहे हैं, या आप कोई हाथ से कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई चीज़ कर रहे हैं, वीडियो गेम खेल रहे हैं,
तो इन सब चीज़ों को दिखाने के लिए मीडियम शॉट और लॉन्ग मीडियम शॉट, मीडियम लॉन्ग शॉट, जो इन दोनों का लॉन्ग शॉट और मीडियम शॉट के बीच का जो एक शॉट होता है, उनका इस्तेमाल करते हैं। तो मुख्य रूप से क्या होता है कि जब हम एक्सट्रीम क्लोजअप की बात करते हैं और क्लोजअप की बात करते हैं, तो उन जगहों पर कॉन्टेक्स्ट उपलब्ध नहीं होता है, क्योंकि सारा फोकस हमारा डिटेल पे होता है। अगर आप किसी ह्यूमन को फ्रेम कर रहे हैं तो आप उनके चेहरे की डिटेल या उनकी डिटेल पूरे फ्रेम को कवर करती है। तो कॉन्टेक्स्ट के डिटेल के लिए आपके पास स्पेस नहीं होता। लेकिन जब हम मीडियम शॉट और लॉन्ग मीडियम शॉट में आते हैं तो कॉन्टेक्स्ट की डिटेल्स भी हमारे पास होती है। जो कॉन्टेक्स्ट है उसकी भी सूचना होती है कि वो एक्टिविटी कहाँ हो रही है। ठीक, जैसे आप यहाँ देखें कि ये मीडियम लॉन्ग शॉट है, ये नी से थोड़ा नीचे इसको फ्रेम किया गया है। तो यहाँ मीडियम शॉट में भी हमें कॉन्टेक्स्ट पता चल रहा है कि ये किसी का लिविंग रूम है जहाँ पे सोफ़ा पड़ा हुआ है। तो कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड भी सूचना आपको मिल रही है और आपके पास फ्रेम में एक्टिविटी करने के लिए, आप बिजनेस शो करने के लिए आपके पास इनफ स्पेस है जहाँ आप कैरेक्टर का बिजनेस शो, वो किस एक्टिविटी में लीन है प्लस किस कॉन्टेक्स्ट में है, इन दोनों को आप शो कर सकते हैं। फिर आप मीडियम लॉन्ग शॉट में देखिए, जो नी के नीचे है, कॉन्टेक्स्ट के लिए और ज़्यादा जगह मिलती है और ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड सूचना है। साथ ही जो कैरेक्टर एक्टिविटी कर रहा है उस एक्टिविटी के लिए भी काफ़ी स्पेस, काफ़ी फ्रेम में स्पेस है जिससे हम उस एक्टिविटी को दिखा सकते हैं। इसके बाद जो एक लॉन्ग शॉट होता है जिसको हम फुल शॉट भी बोलते हैं, जिसमें आपका कैरेक्टर पूरा आता है, वो एक ढंग से उसकी एक्टिविटीज़ के बारे में भी पूरी सूचना देता है और कॉन्टेक्स्ट के बारे में भी डिटेल्ड सूचना देता है। अब इस लॉन्ग शॉट को आप देखें तो इस लॉन्ग शॉट में जो आपका सब्जेक्ट है उसका फुल शॉट है, प्लस जो कॉन्टेक्स्ट है उसकी भी ज़्यादा डिटेल्स हैं। पूरा लिविंग रूम दिख रहा है, सोफ़ा दिख रहा है, बेड भी एक लगा हुआ दिख रहा है, टेबल दिख रहा है, कूलर का भी एक पोर्शन दिख रहा है। तो ये एक ड्राइंग रूम का, एक बैठक का दृश्य है और लॉन्ग शॉट के कारण हमारा जो कैरेक्टर है, हमारा जो सब्जेक्ट है, उसके बारे में भी पूरी सूचना है। साथ ही उसका जो संदर्भ है, वो जहाँ है, जिस स्थिति में है, उसके बारे में भी काफ़ी हद तक सूचना मिल रही है। और आपका कैरेक्टर जो एक्टिविटी करेगा, यहाँ तो चलिए कि ये एक स्टिल फोटोग्राफ्स हैं, लेकिन जहाँ पे एक्टिविटीज़ हैं तो काफ़ी स्पेस होता है लॉन्ग शॉट में कि आप अपने कैरेक्टर की एक्टिविटीज़ को आप दिखा सकें। तो इस सत्र के बीच में हम यहाँ थोड़ा सा एक विराम लेंगे और इस विराम के बाद, छोटे से विराम के बाद, अल्प विराम के बाद, हम कैमरा संचालन पर अपनी बातचीत जारी रखेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। Are you interested in television journalism or radio journalism or online journalism? Or do you want to learn with the flexibility of open learning? Or if you are a working professional, wants to enhance your knowledge and skill with certification in the field of electronic media, then School of Journalism and New Media Study, IGNOU, offers PG Diploma in Electronic Media for you. This program includes audio and audio-visual program production for radio, television and online platforms. Here are some important details about the program. We have total 8 courses of 32 credits, 6 theory courses, 1 practical and 1 project. Eligibility: bachelor's degree in any subject. Minimum duration 1 year, maximum 3 years. Medium is English, but students can write their examinations
assignments, practical and project in Hindi also. So if you are interested in television, radio or online media, please come and join IGNOU's PG Diploma in Electronic Media. स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड न्यू मीडिया स्टडीज़ के टेली कॉन्फ्रेंसिंग सेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हम अलग अलग तरीके के शॉर्ट साइजेस पर चर्चा कर रहे थे और हमने ये चर्चा की थी कि ये जो अलग अलग तरीके के शॉर्ट साइजेस हैं अलग अलग प्रकार के, उनका उद्देश्य होता है एक ख़ास उद्देश्यों के लिए हम उनका इस्तेमाल करते हैं। और हमने कई शॉर्ट साइजेस देखे, हमने एक्सट्रीम क्लोज़अप देखा, मिड क्लोज़अप देखा, मीडियम शॉट देखा, मीडियम लॉन्ग शॉट देखा, हमने लॉन्ग शॉट देखा। और अब जो एक अंतिम इन शॉर्ट साइजेस में है वो एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट है। एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट में जो आपका फोकस होता है मुख्य रूप से कॉन्टेक्स्ट को इस्टेब्लिश करना होता है कि किस संदर्भ में, संदर्भ कहें कि किस स्थान पर उसके चारों तरफ कौन सी स्थिति है जहां पर आपका कैरेक्टर है। तो जब इस एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट में आप देखेंगे कि फ्रेम में जो कॉन्टेक्स्ट है, जो बैकग्राउंड है, उनकी डिटेल्स ज़्यादा होती है। जिस कॉन्टेक्स्ट में आपका कैरेक्टर खड़ा है या काम कर रहा है या एक्ट कर रहा है, उस कॉन्टेक्स्ट के बारे में विस्तृत जानकारी एक्सट्रीम क्लोजअप में होती है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं उदाहरण में। तो अब अगर हम देखें जैसे कि जो एक मूलभूत नियम है, कोई फिक्स, कोई भी जो सृजनात्मक क्षेत्र है जहाँ पे हम क्रिएटिविटी का प्रयोग करते हैं, वहाँ कोई बिल्कुल ही सख्त नियम नहीं हो सकता। लेकिन कुछ मूलभूत नियम होते हैं जिनका यदि हम पालन करें तो हम प्रारंभिक अवस्था में जब हम सीख रहे होते हैं तब हम बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो उसी प्रकार का जैसे एक नियम है कि लॉन्ग शॉट, मिड शॉट और क्लोजअप, इस सीक्वेंस को फॉलो करना चाहिए। तो लॉन्ग शॉट क्या होता है कि आपके कैरेक्टर को, या लॉन्ग शॉट या एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट, आपके कैरेक्टर को, जैसे ये एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट है तो एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट बता रहा है कि आपका जो कैरेक्टर है वो एक किसी कॉलोनी है जहाँ पे आवासीय परिसर है, वहाँ पे वह खड़ी है। ठीक, अब यहाँ पे खड़ी अगर वो रो रही है, ठीक है, या वो डरी हुई है या वो खुश है, तो आपने एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट में आपने ये एस्टैब्लिश किया कि आपका कैरेक्टर कहाँ है, किस लोकेशन पे है, ठीक, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। फिर आप मिड शॉट में या पहले एक लॉन्ग शॉट के लिए आप जा सकते हैं, फिर आप मिड शॉट में जाएंगे तो उसके चेहरे का एक एक्टिविटी, एक एक्सप्रेशन का एक हिस्सा आपको प्राप्त होगा, दर्शक देख सकते हैं। और फिर जब आप क्लोजअप में जाते हैं तब आप डिटेल में दिखा सकते हैं कि उसके फेस पे क्या एक्सप्रेशन है, वो कैरेक्टर डर रही है, रो रही है या खुश है। तो लॉन्ग शॉट, मिड शॉट और क्लोजअप, इस सीक्वेंस को कई बार हम फॉलो करते हैं तो हम दिखा सकते हैं कि हमारा कैरेक्टर किस कॉन्टेक्स्ट में खड़ा है, क्या कर रहा है, और फिर बाद में उसके फेस पे क्या एक्सप्रेशन है। क्योंकि फेस का जो एक्सप्रेशन है वो जो बिजनेस है उसके बारे में, बिजनेस यानी जो एक्टिविटी आपका कैरेक्टर कर रहा है उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है। वो कहानी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो ये तो हमने देखा कि 7 मुख्य रूप से हमने देखा कि 3 प्रकार के शॉर्ट साइजेस होते हैं,
क्लोजअप, मीडियम शॉट एंड लॉन्ग शॉट, लेकिन उन्हीं के बीच अलग अलग क्लासिफिकेशन करके आपने देखा कि कुल 7 प्रकार के अलग अलग तरीके के शॉट साइजेस की हमने चर्चा की, जिसमें एक्सट्रीम क्लोजअप, क्लोजअप, मिड क्लोजअप, मीडियम शॉट, मीडियम लॉन्ग शॉट और एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट, ये 7 अलग अलग प्रकार के शॉट साइजेस। शॉट साइजेस के अलावा जो दृश्य भाषा के व्याकरण में जिसका एक महत्वपूर्ण स्थान है वो कैमरा एंगल है। कैमरा एंगल मुख्य रूप से कैमरा एंगल को अगर हम समझें तो जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के रिलेशन में आपका कैमरा कहाँ प्लेस्ड है, ठीक है, वो कैमरा एंगल है। जैसे आप इस कार्यक्रम को यदि देख रहे हैं तो ये आई लेवल शॉट है। यहाँ पे जो कैमरा का पोजीशन है वो आप जो सब्जेक्ट यानी मैं हूँ उसके आई लेवल पे है, ठीक। तो कैमरा कहाँ है, अगर कैमरा नीचे जाएगा, कैमरा आई लेवल से ऊपर जाएगा तो वो कैमरा एंगल में परिवर्तन होगा। और मुख्य रूप से 3 प्रकार के कैमरा एंगल की हम चर्चा करेंगे। आई लेवल शॉट, जैसा मैंने अभी आपको बताया, दूसरा हाई एंगल शॉट और तीसरा लो एंगल शॉट। इसमें भी कुछ और वेरिएशंस हैं जिनको हम देखेंगे कि हाई एंगल शॉट्स में ही कुछ और वेरिएशंस हो सकते हैं और लो एंगल शॉट्स में भी कुछ वेरिएशंस हो सकते हैं। एक ही चीज़ को दिखाना है, हम एक ही चीज़ को दिखाना है, लेकिन अगर आप एक अलग तरीके के शॉट साइज का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक अलग तरीके के कैमरा एंगल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप अर्थ के साथ खेल सकते हैं और अर्थ के साथ खेला जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक एग्जाम्पल मैंने दिया था और एक एग्जाम्पल से इसको हम समझ लें कि मान लीजिए कि 2 अलग अलग टेलीविज़न चैनल्स की हम बात कर लें, न्यूज़ चैनल्स की बात कर लें, ठीक। एक महिला है जिसने अपना बच्चा खोया है, किसी हॉस्पिटल की मान लीजिए कि कुछ उनकी तरफ से नेग्लिजेंस हुआ है, उसके कारण उस महिला ने बच्चा खोया है, ठीक। अब ये एक कहानी है, एक स्टोरी है, एक खबर है, ठीक। इसको शूट करने के लिए या इसको बनाने के लिए जो हम विजुअल्स, इस पर पैकेज हमने बनाया, दोनों चैनल्स ने पैकेज बनाया और दोनों अलग अलग तरीके का विजुअल सेलेक्ट करके सेम चीज़ को अलग अलग प्रभाव के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे मान लें कि चैनल 1 ने लॉन्ग शॉट दिखाया कि महिला हॉस्पिटल के सामने धरने पे बैठी हुई हैं, ठीक है, या एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट भी दिखाया जहां वो पूरा हॉस्पिटल की बिल्डिंग दिख रही है, फिर वो लॉन्ग शॉट पे गए और उन्होंने बहुत कम एक्सट्रीम क्लोजअप या क्लोजअप का इस्तेमाल किया अपनी खबर में, ठीक। तो अगर उन्होंने अपनी खबर में बहुत कम क्लोजअप और एक्सट्रीम क्लोजअप का इस्तेमाल किया तो इसका मतलब वो ये तो कह रहे हैं कि हमने इस खबर को कवर किया, ऐसा ना कोई कहे कि हमने इस खबर को कवर नहीं किया, ठीक। लेकिन वो उस माँ की जो इमोशनल फीलिंग है, उनकी जो भावनाएं हैं, उनको दर्शकों तक ठीक से नहीं पहुंचा रहे हैं। और अगर वो ठीक से नहीं पहुंचा रहे हैं तो प्रभाव वो जिस तरीके से पहुंचा रहे हैं उसी तरीके का रहेगा। अब चैनल नंबर 2 जो है उसने भी इस स्टोरी को कवर किया, उसने जो इस स्टोरी पर आधारित अपना पैकेज बनाया, उसमें जो विजुअल्स थे उसमें माँ के क्लोजअप्स थे, ठीक है। आपको एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट भी लेना होगा, लॉन्ग शॉट भी लेना होगा, आपको एस्टैब्लिश करना होगा कि वो महिला, वो माँ कहाँ धरने पर बैठी हुई है, ठीक। लेकिन उस चैनल नंबर 2 ने अपने पैकेज में बार बार उस महिला के क्लोजअप और एक्सट्रीम क्लोजअप का, उनकी सूनी आंखें, आंसू बह के जैसे सूख गए हों, इन सब चीज़ों को क्लोजअप और एक्सट्रीम क्लोजअप से बार बार दिखाया अपने पैकेज में, उनका इस्तेमाल ज़्यादा किया। अब कहने को दोनों चैनल ने इस खबर को कवर किया, लेकिन दोनों चैनल का इंटेंशन या दोनों चैनल को देखने के बाद जो प्रभाव पैदा होगा वो प्रभाव अलग अलग पैदा होगा। चैनल नंबर 1 को देख के लगेगा कि अच्छा ठीक है, कोई स्टोरी है, किसी महिला के साथ गलत हुआ, लेकिन जो चैनल नंबर 2 ने बार बार क्लोजअप और एक्सट्रीम क्लोजअप के साथ अपना पैकेज बनाया है, वो दर्शकों पर ज़्यादा भावनात्मक असर डाल पाएगा। एक पब्लिक स्ट्रांग ओपिनियन उस हॉस्पिटल के खिलाफ बन सकती है या इस ढंग के मेडिकल नेग्लिजेंस के मामलों के खिलाफ बन सकती है। तो एक ही चीज़ हम दिखा रहे हैं,
एक ही व्यक्ति को दिखा रहे हैं, एक ही स्टोरी दिखा रहे हैं, लेकिन हम किन शॉट साइजेस का इस्तेमाल करते हैं उसके कारण उस स्टोरी का क्या प्रभाव पड़ेगा दर्शकों पर, वो अलग अलग हो सकता है। और यही दृश्य भाषा का व्याकरण है। अगर दृश्य भाषा का व्याकरण आप अच्छे से जानते हैं तो आप जो आपका इंटेंशन है, जो आप चाहते हैं, उस ढंग का प्रभाव पैदा करने में आप सक्षम होंगे। अब हम कैमरा एंगल्स की बात कर लें। कैमरा एंगल्स में मैंने आपको कहा कि जो कैमरा और कैरेक्टर का जो रिलेटिव पोजीशन है वो कैमरा एंगल तय करता है। अगर आपका कैमरा कैरेक्टर के आई लेवल पे है, बिल्कुल सामने है, तो वो आई लेवल हम बोलेंगे उसको। अगर आपका कैमरा आई लेवल से जैसे जैसे ऊपर जाएगा कैरेक्टर से, वो हाई एंगल शॉट्स होंगे, और जैसे जैसे आई लेवल से नीचे जाएगा वो लो एंगल शॉट्स होंगे। और इन एंगल्स का भी प्रभाव है, और इन एंगल्स का उपयोग भी प्रभाव पैदा करने के लिए, अलग अलग अर्थ पैदा करने के लिए किया जाता है और किया जाना चाहिए। यदि आप एक कुशल ऑडियो विजुअल कम्युनिकेटर हैं, दृश्य श्रव्य संचारक हैं, तो आपको कैमरा एंगल्स का कैसे हम प्रयोग कर सकते हैं अलग अर्थ पैदा करने के लिए, अलग प्रभाव पैदा करने के लिए, ये आपको समझना चाहिए। आई लेवल की जहाँ तक मैंने बात की, आई लेवल का मैंने एग्जांपल दिया कि आप जो ये शॉट देख रहे हैं अभी का, ये एक आई लेवल शॉट है, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट मैं हूँ और मेरे आई लेवल पे ही कैमरा प्लेस है, तो ये एक आई लेवल शॉट का एग्जांपल है। अब आप देखिए, ये हाई एंगल शॉट का एग्जांपल है। हाई एंगल शॉट में मैंने क्या कहा कि कैमरा आई लेवल से ऊपर की ओर जाता है। जब कैमरा आई लेवल से ऊपर की ओर जाता है तो जो शॉट मिलता है वो उसको हम हाई एंगल शॉट बोलते हैं। हाई एंगल शॉट का प्रयोग कई अलग अलग उद्देश्यों के लिए किया जाता है। मुख्य रूप से हाई एंगल शॉट में आप सब्जेक्ट को कम असरदार दिखाते हैं, कम प्रभावकारी दिखाते हैं। आपका सब्जेक्ट जो है आपको छोटा दिखाई पड़ता है। ये एक सामान्य मनोवैज्ञानिक सी चीज़ है कि अगर हमारी हाइट ऊंची है और हम नीचे एक चूहे को देखते हैं, नीचे एक चूहा एक छोटा सा जीव होता है, या नीचे एक मान लीजिए कि कोई और सांप है, या कोई भी छोटा जीव है, कोई मेमना है, या कोई भी है, बिल्ली का बच्चा है या बिल्ली है, तो जब हम देखते हैं तो हमारी तुलना में वो हमें छोटा दिखाई पड़ता है। हमारी तुलना में उसका अस्तित्व छोटा दिखाई पड़ता है क्योंकि हमारी हाइट ज़्यादा है। और यदि हम किसी 20 फीट ऊंचे, मान लीजिए कि आप एक हाथी को देख रहे हैं, तो हाथी को देखने के लिए आपको ऊपर की ओर देखना पड़ता है। अगर आप आईज को अपना कैमरा मान लें, जो हमारे लिए है, तो आपका जो कैमरा है वो लो एंगल पे आ जाता है। आपको हाथी जायंट दिखाई पड़ता है, बड़ा दिखाई पड़ता है, जिराफ बड़ा दिखाई पड़ता है, कोई बड़ी ऊंची बिल्डिंग है वो बड़ा दिखाई पड़ता है। तो जब ये ऐसी बड़ी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं तो क्या प्रभाव दिमाग में आता है? दिमाग में आता है कि वो ज़्यादा मजबूत हैं, वो ज़्यादा ताकतवर हैं, वो विशाल हैं, वो जायंट हैं, वो ह्यूज हैं, उनका जलवा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत बड़ा है। यही चीज़ें कैमरे में भी होती हैं। जब आप हाई एंगल शॉट लेते हैं तो हाई एंगल शॉट में आपका जो सब्जेक्ट है वो वीकर दिखाई पड़ता है, ठीक है, वो लेस इन्फ्लुएंशियल दिखाई पड़ता है। कई बार क्या होता है कि आप कोई बहुत ही ज़्यादा लंबा व्यक्ति है या लंबी मॉडल है और वो बहुत ज़्यादा है, और आपको प्रोपोर्शन में किसी और के साथ अगर शॉट्स कंबाइन करने हैं तो आप एंगल बढ़ाते हैं, आप हाई एंगल शॉट लेते हैं ताकि उसकी हाइट थोड़ी कम दिखाई पड़े। ठीक, तो ये आप देख सकते हैं कि ये हाई एंगल शॉट का एग्जांपल है। यहाँ कैमरा प्लेस्ड है, आई लेवल से ऊपर प्लेस्ड है, और यहाँ आपका जो सब्जेक्ट है वो आपको कंपैरेटिवली वीकर दिखाई पड़ता है, लेस सिग्निफिकेंस दिखाई पड़ता है, कम इंपॉर्टेंट दिखाई पड़ता है। यही सेम सब्जेक्ट जब लो एंगल में जाता है, सेम सब्जेक्ट है, ये दोनों सब्जेक्ट बिल्कुल सेम है। आप हाई एंगल शॉट को देख के आप देखें कि क्या आपके दिमाग में आता है, और लो एंगल शॉट को देख के क्या दिमाग में आता है। जैसे ही लो एंगल का मतलब हो गया कि आई लेवल से कैमरा नीचे की ओर जा रहा है, ठीक, तो आई लेवल से कैमरा जब नीचे की ओर जाता है तो इसका प्रयोग हम सब्जेक्ट को ज़्यादा स्ट्रांग, ज़्यादा डोमिनेंट, ज़्यादा प्रभावकारी,
ज़्यादा ताकतवर, ज़्यादा रसूख वाला, रुतबे वाला दिखाने में हम प्रयोग करते हैं। तो ये आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि एक ही सब्जेक्ट जब हाई एंगल से इसको शूट किया गया है और लो एंगल से शूट किया गया है, तो लो एंगल के केस में इसका डोमिनेंस ज़्यादा लग रहा है, ये ज़्यादा पावरफुल लग रहा है, ये ज़्यादा मजबूत लग रहा है, इसका प्रभाव ज़्यादा दिख रहा है। जैसे आप बहुत देखते होंगे कि फिल्मों में या कई जगहों पे, वेब सीरीज़ में, या इवन जो हमारे धारावाहिक होते हैं वहाँ भी कोई बहुत किसी व्यक्ति को या किसी कैरेक्टर को बहुत इम्पोर्टेंस देना होता है, उसकी एंट्री को बहुत हमें साबित करना होता है कि जो ये पात्र आ रहा है ये बहुत ही प्रभावशाली है, बहुत ही ताकतवर है, तो आप लो एंगल शॉट्स देखते हैं कि वो लो एंगल शॉट्स का प्रयोग करते हैं। तो एक ही सब्जेक्ट को, जैसे मैंने कहा कि एक ही चीज़ को, उसी महिला को जो हॉस्पिटल के आगे धरना दे रही हैं, आप अगर अलग अलग शॉट साइजेस में दिखा रहे हैं तो अलग अलग तरह का अर्थ पैदा होता है, अलग अलग तरह का प्रभाव पैदा होता है दर्शकों पर। वही चीज़ कैमरा एंगल में भी है। एक चीज़ को आप अगर हाई एंगल से दिखाएंगे तो वो लेस डोमिनेंट, कम प्रभावकारी, कम मजबूत, कम ताकतवर दिखाई पड़ेगा आपका सब्जेक्ट, और उसी सब्जेक्ट को आप अगर लो एंगल से दिखाएंगे तो वो ज़्यादा ताकतवर, ज़्यादा प्रभावशाली, ज़्यादा रसूखदार, ज़्यादा जायंट, डोमिनेंट वो दिखाई पड़ेगा। तो ये कैमरा पर्सन तय करता है, और कैमरा पर्सन के पीछे जो डायरेक्टर होता है या प्रोड्यूसर होता है, प्रोड्यूसर न्यूज़ चैनल्स के सेंस में कहें तो प्रोड्यूसर जो होता है, तो जो क्रिएटिव, जो कंटेंट का क्रिएटिव नेचर तय करता है, ये कैमरा पर्सन और डायरेक्टर या प्रोड्यूसर मिल के ये तय करते हैं कि किस एंगल से हमें क्या चीज़ें लेनी है, क्योंकि कहानी क्या कहना चाहती है। हम कैमरा पर्सन या कैमरा के थ्रू ही हम उस कहानी को कह रहे हैं। तो अगर कहानी उस एक परिस्थिति में उस पात्र को बहुत मजबूत दिखाना चाह रही है तो हमें लो एंगल शॉट्स के लिए जाना होगा, और बाद में जब कैसे परिवर्तन होता है उसके जीवन में, और जब उसी पात्र को जब कमजोर स्थिति में दिखाना चाहती है तो हम कई बार हाई एंगल शॉट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक ही सब्जेक्ट को अलग अलग एंगल से शूट करने पे, अलग अलग कैमरा एंगल से शूट करने पर अलग अलग अर्थ और अलग अलग प्रभाव पैदा होता है। अब इसमें ही हाई एंगल को अगर आप और ज़्यादा ऊंचाई पे जाएं तो आप जिसको एरियल शॉट या बर्ड्स आई व्यू शॉट बोलते हैं। बर्ड्स आई व्यू शॉट है कि बर्ड्स जब उड़ती है और अपनी आँखों से जो वो नीचे दृश्य देखती है तो वो बर्ड्स आई व्यू शॉट है। ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल करके हम इस ढंग के शॉट्स, एरियल शॉट्स अब ले सकते हैं। पहले हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल होता था, कुछ जगहों पे क्रेन्स का भी इस्तेमाल करके आप इस ढंग के शॉट ले सकते हैं, या आप कहीं टॉलर बिल्डिंग पे कैमरा प्लेस करके भी उस ढंग के शॉट ले सकते हैं। आजकल ड्रोन फोटोग्राफी और ड्रोन से भी शूटिंग काफ़ी हो रही है और पॉपुलर है। तो बर्ड्स आई व्यू शॉट एक टाइप का हाई एंगल शॉट ही है, लेकिन एक्सट्रीम है। यहाँ कैमरे का एंगल बहुत ज़्यादा है और ये वो व्यू देता है जब एक बर्ड उड़ रही है आकाश में और जब वो नीचे जो उसको दृश्य दिखाई पड़ता है वो व्यू बर्ड्स आई व्यू शॉट में मिलता है। और किसी भी चीज़ के स्पेशली जैसे अभी एक बर्ड्स आई व्यू का शॉट का आप एग्जांपल लें तो ये एक डिज़ाइन, बच्चे खड़े हैं कि स्कूल के ग्राउंड का शॉट है और ये एक पैटर्न और डिज़ाइन को दिखा रहा है। अब मान लीजिए कि यही बच्चे और अलग अलग पैटर्न में अगर स्कूल ड्रेस में खड़े होते या बैठे हुए होते, अलग अलग फ्लावर के या राउंड 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 कई सारे सर्किल में अगर बैठे होते तो आप किसी और एंगल से उस खूबसूरती को कैप्चर नहीं कर सकते थे। एक स्कूल का ग्राउंड है और वहाँ 20-20 बच्चे अलग अलग सर्किल बना के फ्लावर के शेप में, वो सर्किल्स मिल के फ्लावर के शेप ले रही है और वो बैठे हुए हैं। तो इस दृश्य की खूबसूरती को आप किसी और एंगल से, आप आई लेवल से नहीं शूट कर सकते, लो एंगल तो कर ही नहीं सकते, नॉर्मल हाई एंगल से भी नहीं कर सकते, आपको बर्ड्स आई व्यू शॉट के लिए ही जाना पड़ेगा। कई बार किसी ह्यूज पैलेस का या ह्यूज कंस्ट्रक्शन की ब्यूटी दिखानी हो, उसका पूरा ओवरऑल ऊपर से उसको इस्टेब्लिश करना हो कि कितना भव्य है, क्या डिज़ाइंस हैं, उन सब चीज़ों में हम बर्ड्स आई व्यू शॉट का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा वर्म्स आई व्यू शॉट, ये एक एक्सट्रीम तरीके का लो एंगल शॉट है।
जैसे बर्ड्स आई व्यू एक्सट्रीम तरीके का हाई एंगल शॉट है, वैसे ही ये एक एक्सट्रीम तरीके का लो एंगल शॉट है। जैसे बर्ड्स आई व्यू का मतलब है कि एक बर्ड उड़ते हुए जब नीचे दृश्य देखती है वो दृश्य पैदा करना, वो चीज़ दिखाना, वैसे ही वर्म्स आई व्यू का कॉन्सेप्ट है या उद्देश्य है कि एक कीड़ा यानी बहुत छोटा, वर्म बहुत छोटा होता है, वो कैसे किसी व्यक्ति को देखता है, उसकी आंखों से क्या दिखता है वो दिखाना। अब ये जो कैरेक्टर है इसको लो एंगल पे भी ये बड़ा डोमिनेंट दिख रहा था, ठीक है, हाई एंगल पे यही वीक दिख रहा था। अब वर्म्स आई व्यू में यानी एक कीड़े की नज़र से ये आदमी कितना जेंट दिखेगा, ये एक बच्चा है, लेकिन एक वर्म के रेस्पेक्टिव अगर आप इसको देखेंगे और वर्म्स की आंखों को अगर आप कैमरा मान लेंगे, वहां पे कैमरा आप फिट करेंगे और तब उस एंगल से शॉट लेंगे, तो एक छोटा बच्चा भी बहुत जायंट दिखेगा, बहुत ताकतवर दिखेगा, बहुत मजबूत दिखेगा। तो ये वर्म्स आई व्यू है, ये एक एक्सट्रीम तरीके का लो एंगल शॉट है। तो मुख्य रूप से जो एंगल्स हैं वो 3 हैं, आई लेवल, हाई एंगल एंड लो एंगल, और इसी में एक्सट्रीम टाइप के, जैसे हाई एंगल का एक्सट्रीम आप बर्ड्स आई व्यू मान सकते हैं और लो एंगल का एक्सट्रीम वर्म्स आई व्यू शॉट मान सकते हैं। तो ये कैमरा एंगल्स की हमने बात की और हमने देखा कि कैसे अलग अलग एंगल्स का इस्तेमाल कर कर सेम सब्जेक्ट को, सेम परिस्थितियों को, सेम कॉम्पोजिशन को अलग मीनिंग दी जा सकती है और अलग प्रभाव पैदा किया जा सकता है। तो इसका इस्तेमाल आप अपने, जब आप स्टोरी टेलिंग कर रहे हो ऑडियो विजुअल मीडियम के माध्यम से, जब आप अपनी कहानी या अपना संदेश ऑडियो विजुअल माध्यम के से देना चाहते हैं, तो उसमें अगर आप इन चीज़ों को समझते हैं तो इनका आप बेहतर इस्तेमाल, कैमरा एंगल्स का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, शॉट साइजेस का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दृश्य जो भाषा है, जो विजुअल लैंग्वेज है, उसका व्याकरण, उसका ग्रामर की 2 चीज़ें हमने देखी, एक तो शॉर्ट साइजेस देखी, दूसरा कैमरा एंगल देखी। अब हम जो एक तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ है वो है कैमरा मूवमेंट। ठीक, अगर आप दृश्यों को देखें, जो कंटेंट, ऑडियो विजुअल कंटेंट जो आपको दिखाई पड़ता है, तो वहाँ आपको 2 तरह के मूवमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। एक मूवमेंट तो कैरेक्टर्स का होता है, जो सब्जेक्ट्स हैं उनका मूवमेंट्स होता है, और दूसरा मूवमेंट कैमरे का होता है, ठीक है। और इन दोनों मूवमेंट से कई सारे कॉम्बिनेशंस पैदा होते हैं। कई बार आपके कैरेक्टर्स मूव नहीं कर रहे हैं, आपका कैरेक्टर मूव नहीं कर रहा है, केवल कैमरा मूव कर रहा है। कई बार आपका कैमरा स्टैटिक है और कैरेक्टर मूव कर रहे हैं। कई बार कैरेक्टर्स भी मूव कर रहे हैं और कैमरा भी मूव कर रहा है। तो ये तीनों कॉम्बिनेशन जब हम दृश्य श्रव्य माध्यम की बात करते हैं और वहाँ जो मूवमेंट होती है, वहाँ ये तीनों मूवमेंट होता है। तो मुख्य रूप से एक तो कैरेक्टर का मूवमेंट हो गया, दूसरा कैमरे का मूवमेंट हो गया। कैमरे के मूवमेंट के हिसाब से अगर हम देखें तो 2 तरह के शॉट्स होते हैं। पहला तो शॉट हो गया स्टैटिक शॉट। स्टैटिक शॉट मतलब हो गया कि कैमरा फिक्स है, कैमरे का फ्रेम फिक्स है और उसमें कैरेक्टर मूव कर रहा है। जैसे आप अभी जो कार्यक्रम देख रहे हैं, ये स्टैटिक शॉट का एग्जाम्पल है। कैमरे का फ्रेम फिक्स है, उसमें मेरे हाथ का मूवमेंट है, मेरे बोलने का मूवमेंट है, ठीक है, ये कुछ मूवमेंट्स हैं। हो सकता है कि एक व्यक्ति इधर से आके इस फ्रेम को ज्वाइन कर ले, या इस फ्रेम से कोई चीज़ मैं उठा के बाहर रख दूं, ये मूवमेंट्स होंगे। बट ये मूवमेंट्स किसका है? कैरेक्टर्स का है, ये कैमरे का मूवमेंट नहीं है। इसलिए इस ढंग के जो शॉट्स होते हैं हमको स्टैटिक शॉट बोलते हैं, ठीक। दूसरे जो शॉट्स होते हैं वो डायनामिक शॉट्स कहलाते हैं। डायनामिक शॉट्स जहां कैमरे का मूवमेंट होता है। अब स्टैटिक शॉट का जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, मान लीजिए कि यही कैमरे का फ्रेम है और यहाँ 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है, और ये तीसरा व्यक्ति आके उस डिस्कशन को ज्वाइन करता है। फिर 2 मिनट बाद डिस्कशन हॉट होता है और वो दोनों चले जाते हैं, लेकिन कैमरे का फ्रेम स्टैटिक है। तो ये सारा जो शॉट होगा, ठीक है, ये सारे शॉट्स स्टैटिक शॉट कहलाएंगे। डायनामिक शॉट में क्या होता है कि कैमरा मूव करता है, कैमरा कई तरीके से मूव करता है, उन मूवमेंट का भी इंपॉर्टेंस होता है, उन मूवमेंट का भी पर्पस होता है, वो मूवमेंट पर्पसफुली कराए जाते हैं, उनके अलग अलग इम्पैक्ट होते हैं। उन मूवमेंट्स की चर्चा हम
संक्षिप्त रूप से इस सेशन में, इस सत्र में करेंगे, क्योंकि हमारे पास अब बहुत समय नहीं है, तो हम बहुत संक्षिप्त रूप से सारे मूवमेंट्स को भी देखेंगे। ये पैन मूवमेंट है, पैन लेफ्ट और पैन राइट। ये एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है। कैमरा ट्राइपॉड पे या पेडेस्टल पे माउंटेड है, ठीक है। इस एक्सिस पे ये राइट और लेफ्ट जो मूव करता है, जैसा कि आप दृश्य में देख सकते हैं कि वो अपने एक्सिस से राइट जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है, पैन लेफ्ट पैन राइट। ये एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है। एक्सिस पे ही जब वो अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव करता है तो वो एक टिल्ट उसको बोलते हैं, टिल्ट अप टिल्ट डाउन। पहला हॉरिजॉन्टल था, पैन लेफ्ट पैन राइट। दूसरा उसी एक्सिस पे अब अप डाउन हो रहा है तो टिल्ट अप टिल्ट डाउन। कैमरा अगर ऊपर जाता है एक्सिस पे, ठीक है, तो वो टिल्ट अप होगा, कैमरा नीचे जाएगा, एक्सिस पे जाएगा, वो एंगुलर मूवमेंट होगा एक्सिस के साथ। पूरा कैमरा नीचे नहीं जाएगा, वो अपने एक्सिस पे नीचे जा रहा है, एक एंगल बना रहा है। ये एक्सिस फिक्स है, इस पे अगर लेफ्ट राइट हो रहा है ये पैन हुआ, ये अप डाउन हो रहा है तो टिल्ट हुआ, और ये जब ऐसे होगा तो ये एंगल बन रहा है, ठीक है। पूरा कैमरा नीचे जा रहा है, ये एक अलग मूवमेंट है, ठीक है। पूरा कैमरा लेफ्ट राइट जा रहा है, ये एक अलग मूवमेंट है। यहाँ कैमरा पैन में एक एक्सिस पे लेफ्ट राइट जा रहा है और टिल्ट में उसी एक्सिस पे अप डाउन हो रहा है। तो पैन में वो लेफ्ट राइट एंगल्स बनाएगा और टिल्ट में वो ऊपर नीचे एंगल बनाएगा। जब टिल्ट अप होगा तभी एक सर्टेन एंगल एक्सिस के साथ बनेगा, टिल्ट डाउन होगा तभी एक सर्टेन एंगल एक्सिस के साथ बनेगा। अब तीसरा एक इंपॉर्टेंट कैमरा मूवमेंट है डॉली। डॉली में कैमरा सब्जेक्ट की ओर जाता है, दैट इज कॉल्ड डॉली इन, उसको हम डॉली इन कहते हैं, और फिर सब्जेक्ट से वापस दूर भी जा सकता है, उसको हम डॉली आउट बोलते हैं। एक जो आप बहुत पॉपुलर जानते हैं जूम होता है। जूम एक कैमरा मूवमेंट नहीं है, क्योंकि कैमरा उसमें मूव नहीं होता। जूम लेंस की सेटिंग या लेंस में एक ऐसा फीचर है जिसके कारण हम जूम इन और जूम आउट कर पाते हैं, ठीक। तो जूम इन में क्या होता है कि हम सब्जेक्ट के पास जाते हैं, सब्जेक्ट का सिग्निफिकेंस बढ़ता है, वो बड़ा हमारे फ्रेम में आता जाता है। जूम आउट करते हैं तो वो छोटा होता जाता है, ठीक है। डॉली और जूम में फर्क होता है। जब आप इसको हम किसी और सत्र में विस्तार से देखेंगे और उन एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे, और ये आप खुद करके भी देख सकते हैं। डॉली में पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्शन नहीं होता, जबकि जूम में पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्शन होता है। डॉली वैसा ही है जैसा आप जब भी कैमरे से संबंधित कोई काम करें तो अपनी आंखों को कैमरा मान लें, क्योंकि वही कैमरा है आपका, वो भी एक कैमरा ही है। जब आप किसी चीज के पास जाते हैं वो डॉली इन है, जब वहां से दूर आते हैं वो डॉली आउट है, ठीक। डॉली के लिए आप व्हील्स होते हैं कैमरे में लगे हुए, डॉली के ट्रैक्स होते हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग तरीके से हम डॉली कर सकते हैं, और सब्जेक्ट के पास जाना डॉली इन, सब्जेक्ट से दूर आना डॉली आउट। ये पेडेस्टल अप और डाउन देखिए, टिल्ट और पेडेस्टल में फर्क है। टिल्ट में मैंने कहा कि एक्सिस पे वो एंगुलर मूवमेंट है अप डाउन। पेडेस्टल अप डाउन में पूरा पेडेस्टल कैमरा नीचे आता है, पेडेस्टल डाउन में पूरा कैमरा पेडेस्टल पे ऊपर जाता है, वो पेडेस्टल अप हो गया। यहाँ एक्सिस और कैमरे के बीच के एंगल में कोई चेंज नहीं आता है। ये एक्सिस, ये आपका कैमरे का माउंट है, उस पर कैमरा माउंटेड है, ये पूरा नीचे ऊपर आ रहा है, ये पेडेस्टल अप ये पेडेस्टल डाउन। टिल्ट में इस एक्सिस पे ही टिल्ट अप टिल्ट डाउन हो रहा है, यानी एंगल्स में परिवर्तन आ रहा है, यहां एंगल्स में परिवर्तन नहीं आता है, पेडेस्टल अप और डाउन। ट्रक जो मूवमेंट है वो कैमरे के साथ, जैसे डॉली सब्जेक्ट की ओर है, ये साइडवेज मूवमेंट होता है। पूरा का पूरा कैमरा ट्रक हो सकता है, लेफ्ट राइट हो सकता है, सब्जेक्ट के पूरा का पूरा मूव होता है। ये पैन नहीं होता। फिर पैन में ये लेफ्ट राइट हो रहा है एक्सिस पे, ट्रक में पूरा का पूरा कैमरा लेफ्ट राइट जा रहा है, ठीक है। तो ये ट्रक मूवमेंट है। और इस ढंग का मूवमेंट जब आर्क शेप में होता है तो इसको आर्क मूवमेंट बोलते हैं। सब्जेक्ट आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट के आर्क शेप में ये मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो हमने देखा कि ये कुछ मुख्य कैमरा मूवमेंट्स भी थे। इस पूरे सत्र में जो दृश्य भाषा के व्याकरण के जो 3 महत्वपूर्ण पहलू हैं, एक तो शॉट साइजेस, उसकी चर्चा हमने की, उसका उद्देश्य समझा। दूसरा कैमरा एंगल, उसकी चर्चा हमने की, उसका उद्देश्य समझा।
और तीसरा कैमरा मूवमेंट्स, उनको भी संक्षेप में हमने अलग अलग कैमरा मूवमेंट्स को हमने देखा कि किस ढंग से कैमरा भी मूव करता है और उनको उस ढंग के मूवमेंट्स को क्या क्या हम बोलते हैं, इसको हमने संक्षेप में देखा। आशा है मुझे कि ये सत्र आपने अपने लिए उपयोगी पाया होगा। हमें देखते रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।